we are coming to the last of it, basically. In the last class, we had discussed how to make a north-seeking gyro compass using gravity, Earth's gravity, by placing a weight on top or at the bottom. So top heavy gravity control or bottom heavy gravity control. The two types we have seen. There are different kind of compasses which are using the two methods. Sperry compasses are normally top heavy. Then there is another kind of compass, anchois compass is there, which is using bottom heavy. The difference between the two, of course, is the weight, but along with the weight, what changes is the rotation of the rotor as seen from the south end. Top heavy is counterclockwise, bottom heavy is clockwise rotation as seen from the south end of the spin axis. So we have seen the behavior of the north-seeking gyro compass when we are using gravity control. It goes in elliptical cycles about the meridian. If the meridian is right in the center, then it keeps on doing like this in elliptical path. For the gyro compass to be used as a direction finding device, this oscillation has to be removed. The oscillations have to be eliminated so that the spin axis is pointing directly to the true north, and there is no oscillation. The process which is used to eliminate the oscillations is called damping. When we use the damping in the gyro compass, the result is that the amplitude of oscillations keeps on reducing in every cycle, and finally it settles down pointing to north with either zero oscillations or negligible oscillation. इतना कि पता भी नहीं चल रहा है. So what we are going to discuss today is damping. Generic definition: damping is the process by which we eliminate the elliptical oscillations of the gravity controlled gyro compass in such a way that the amplitude of oscillations are reducing in every cycle, in successive cycles, and finally the spin axis settles down pointing to north. Now the terms that we used here is oscillations, which we are well aware, going about meridian east and west, that is oscillation. Repetitive cycle, repetitive activity happening again and again, so it goes into oscillations. The next term that we used is amplitude. Now what do we mean by the amplitude? And reducing amplitude in every cycle. What do we mean by that? Supposing this is the north, the spin axis has gone to east about 40 degrees, 040, then it comes back to 000, then it goes. This is the horizon, east and west. The oscillations that we had seen was happening like this. The elliptical oscillations, in which it was going to extreme east and extreme west. This is the amplitude. The reading, if 040 is here, 320 is here, then amplitude is 40 degrees. From the mean 0 point, how much maximum deviation of the spin axis is 040, 320. So either side, it is 40 degrees. When we do damping, the result will be, after damping,
The result is going to be that the oscillations which is happening like this is happening like this. That means in successive cycle, it went to 040. When it came to east, it reduced something like, let us say, 330. In the next cycle, going towards east, it reduced to, let us say, how much? 015 degrees. When it came to this side, this became 005 degrees. Oh, sorry, 355 degrees. When it went again to this side, it is 010 degrees, 001. Finally, it is settling down at this point. Now this settling point, okay, I drew this, so I got confused here with this line. It should actually settle down here. So if you make the diagram again, same thing. वो जो horizontal line बनाया था उसके चलते गड़बड़ हो गया थोड़ा सा. So it will go like this and settle down at this place. This is what we are saying, the reducing amplitude. यहाँ से जितना था उससे कम हुआ, उससे फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, 0 finally. So this one, where it is settling down, is called settling point. Wherever the spin axis is finally settling down is called settling point. And the time taken to settle down is, of course, settling time, which varies for different compasses depending on the damping. How much time it is going to take is going to depend on damping. So repeating again, this is the process of damping by which we eliminate the oscillations by reducing the amplitude of oscillation in every cycle, so that finally the spin axis settles down pointing to north. If this was the tip, which is the north end, it was doing like this. There was tilting and drifting and tilting and drifting along with control precession. Remember that we had drifting here, we had tilting here, and there was control precession PC here. These three were there when we had only a free gyroscope and we had gravity control. Now this damping is going to get included here, that results in this. So now there will be force factor included, which is PD, damping precession. This was control precession. Now fourth input, which is going to be PD, damping precession. Excuse me, sir. Go ahead. Sir, damping basically drifting रोकता है gyro compass की या tilting भी? दोनों रोकता है. अभी हम देखेंगे कि the damping which we said, generic definition जो अभी हमने बोला, can you please repeat it for me? What is damping? General terms में, एकदम word by word नहीं, but general terms में damping क्या करता है? हिंदी में बोल दो. सर एक ही पॉइंट पे सेटल कर देता है, ऑसिलेशन रोक देता है उसकी. नहीं, हमने क्या कहा कि it reduces the amplitude of oscillations in successive cycles so that finally it settles down there. अगर ऐसा नहीं है कि ये घूम रहा है, ग्रेविटी कंट्रोल डैम्पिंग डाला तो फट से जाके यहाँ रुक गया, ऐसा नहीं होता. डैम्पिंग के बाद ये होता है. So generally you are right कि finally it will allow it to settle at some place. सर इसीलिए सर्विस के बाद उसको कुछ देर छोड़ देते हैं क्या कि उसको सेटल्ड होने दो?
आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आपके जहाज पे जायरो रिपेयर करने के लिए आता है, सर्विस करने के लिए एनुअल सर्विस होती है. Yes, sir. यस सर. एवरी टाइम द टेक्नीशियन इज कमिंग डूइंग द सर्विस, उसके बाद खाना खा के सोने चला जाता है 4 घंटे के लिए. हाँ जी सर. What he is waiting for? He is waiting for the gyro compass to settle down. हाँ सर वही बोलता है Remember, settle down. एक साइकिल में 1.5 से 2 घंटे लग रहे थे, लग रहे थे या नहीं? हाँ सर एक साइकिल में 1.5 से 2 घंटे लग रहे थे. जो टाइम पीरियड था ऑसिलेशन का, that was something like 1.5 hour to 2 hours. So he is going to sleep because it will go like this, and then it will reduce, and then it will reduce, and then it will reduce, and the gyro will settle down pointing to north. This was the process which was happening. Remember that the first thing that we said when making a gravity control gyro compass, north-seeking gyro compass, the 3 things that was required by the compass: remain horizontal, remain pointing to north irrespective of where the ship is going. The compass is installed on the ship. Ship may go here, ship may go there, but the pointer, the spin axis remains there. And the third point, what it said, if disturbed, it should come back pointing to north again. How will it come? By way of damping. The whole process is that all these inputs are making the spin axis finally coming to a stop pointing to north. Are we clear? So Yes, the technician which is coming on board and he is waiting for the gyro to settle down, this is the process which is happening there, because it is going east and west and east and west and reducing. Finally, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इंटरेस्ट लेके देखा हो कि क्या हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि सर्विस के बाद जब स्विच ऑन करते हैं तो वी डोंट नो वेयर नॉर्थ इज. When the thing is switched on, we don't know where the north is. So स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं तो वही टिल्टिंग शुरू होती है, वही ड्रिफ्टिंग होती है और पीसी लगता है और डैम्पिंग लगती है और करते हुए वो वापस आता है और सेटल कर जाता है. आप देखेंगे इट इज गोइंग टू सम, लेट अस से अगर 0 पे था तो 040 जाता है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, रीडिंग 00 आता है, फिर वो वेस्ट की तरफ चला जाता है, 355, 350, 350 and 45, etc., etc. Then again it comes to meridian. So the reading will keep on changing like this and slowly it will settle down pointing to north. Getting the picture? Yes sir. Okay. So the question that was asked to me right now was whether we are stopping the drifting or we are stopping the tilting. So the damping is of 2 types. Damping in tilt and damping in azimuth. These are the 2 types of damping. We know already tilting is all about vertical movement of the spin axis and azimuth change is horizontal movement of the spin axis. So we can do the damping either in this plane, vertical plane, or we can do the damping in horizontal plane. When we do the damping in vertical plane, we call it damping in tilt. Conversely, when we do the damping in azimuth, it is the drifting part in horizontal plane. Now remember that a free gyroscope is raising up because of tilting. Drifting is happening. अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं
So drifting is eastward, tilting is happening, which is upwards, positive. PC is applied opposite to DR because of tilting. So at one point of time, the spin axis is having these three things. Remember that PC is happening because of TG. Is that correct or not? यस सर, क्योंकि जब टिल्ट होगा तभी वेट लगेगा और फोर्स लगेगा। एग्जैक्टली। तो जब वेट लगता है, टिल्टिंग हुआ, वेट लगा, तो उसको इधर कंट्रोल प्रेसेशन लगती है। अगर हम इस टिल्टिंग को थोड़ा सा रोकें, जो टिल्टिंग ऊपर हो रही थी नॉर्थ हेमिस्फीयर, टिल्टिंग हो रही थी, उसको अगर थोड़ा सा हम रोकें, तो ये कंट्रोल प्रेसेशन का लगना विल बी स्लो डाउन। यस सर, कम हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। So that is one way. Otherwise, when on the other hand, when tilting is happening downwards, अगर हम उसको downward जाने से रोकें, तो फिर से कंट्रोल प्रेसेशन का लगना थोड़ा सा स्लो डाउन होएगा। Remember that because of control precession, it is going so much. In this diagram, when we said when we saw this, it was going to west because there was so much of tilting. अगर हमने टिल्टिंग को थोड़ा सा अपोज किया होता तो इतना दूर वेस्ट में नहीं जाता, उतनी टिल्टिंग के चलते कंट्रोल प्रेसेशन कम लगती। करेक्ट? यस सर। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डैम्पिंग। एक तो हम इसको टीजी को कंट्रोल करें, या जो ड्रिफ्टिंग हो रही थी, ड्रिफ्टिंग के चलते जो इस तरफ को जा रहा था, it was going away from the meridian. So during this time, if I oppose it, तो जितनी दूर ड्रिफ्टिंग हो रही थी उससे कम होएगा। अगर हमने इधर जाते को अगर रोक दिया तो ड्रिफ्टिंग would be less, and so it would not reach here. Maybe it will reach only this point. So we can apply two kind of forces, एक TG के ऑपोजिट और एक DR के ऑपोजिट। And this is what is said to be two types of damping: damping in tilt and damping in azimuth. Tilting is taking the spin axis upwards, but I want by PD, I want it to go down. That means this is another precession naturally. If I want the spin axis to move opposite to the tilting, अगर tilting ऊपर थी और मैं चाहता हूं कि ये इतना ऊपर ना जाए, तो मुझको ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स द स्पिन एक्सिस मस्ट गो डाउन। So this is the physical movement of the spin axis. It was going like this. I wanted to move down. So there is another precession, PD, damping precession, which causes it to go opposite to tilting. This is similar to the door opening. When you open the door and it is going to close, तो झटके से नहीं होता, because there is an opposing force. So it comes slowly and settles down at the door frame. So damping in tilt is basically precession towards horizon. What is meaning? अगर
टिल्टिंग ऊपर हो रही है तो हम उसको हॉराइजन की तरफ लेके जाते हैं, अगर नीचे जा रहा है हॉराइजन से तो हम उसको वापस ऊपर हॉराइजन की तरफ लेके आते हैं. So damping in tilt means precession towards horizon. We are trying to make the spin axis precess towards the horizon. Whenever it goes away from the horizon, either upwards or downwards, we oppose it by damping. Damping in tilt or damping in azimuth is precession towards meridian. That means when it is going away from the meridian, I stop it. When it is coming towards the meridian, I help him. Yes, yes, go on, go on, go on. But when it goes past the meridian, दूसरी तरफ डेविएट होने लगता है तो हम उसका अपोज करते हैं. नहीं, नहीं. So when it is moving towards the meridian, I help him. Damping helps him. When it goes away from the meridian, I oppose. ना, उधर नहीं. Now that you understand what is precession, precession is the result of a torque applied. Correct or not? Yes, sir. So when I want the precession in this or this direction, vertical plane में, if I want precession, then what kind of torque should I apply? If I want it to move up and down, the torque to be applied is what? Akshay? Akshay? Akshay भैया? तरुण? सब सो गए. अनिल? सर ऊपर से जा रहा है सर. ऊपर से जा रहा है तो कुछ बोलोगे भाई कि ऊपर से जा रहा है नीचे से जा रहा है, तब तो मैं कुछ कोशिश करूंगा ना. कहां तक समझ में आई वो बताओ तो आगे एक्सप्लेन करें. Where are you stuck? Tell me your problem. Have you identified कि मुझको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ये नहीं समझ में आया और उसके आगे फिर नहीं समझ में आ रहा है. नॉर्थ सीकिंग जायरो कंपास समझ में आया? यस सर, वो तो आ गया था सर. ओके, डैम्पिंग समझ में नहीं आया. ठीक है, डैम्पिंग समझ में आया सर, बट ये समझ में नहीं आ रहा इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, ड्रिफ्ट और टिल्ट का डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग कैसा रहेगा. अभी हम वही बात कर रहे थे. अगर दरवाजा इस तरफ को मान लीजिए दरवाजा ऐसे है, आपने इसको खोला, स्प्रिंग के आगे से उसको धक्का दिया या नहीं. अब स्प्रिंग इसको वापस दरवाजे की तरफ लेके आएगा जी. तो जब ये स्प्रिंग इसको उधर वापस लेके जा रहा है, अगर मैंने इसको अपोज कर दिया तो वो धीरे धीरे आएगा या नहीं? आराम से. वही डैम्पिंग है. तो स्पिन एक्सिस ऊपर की तरफ भाग रहा है, मैंने उसको अपोज कर दिया कि ऊपर नहीं, आराम से आराम से आराम से, तो ये इसका ये मूवमेंट थोड़ा धीरे हो जाएगा. यस. अगर ये धीरे हुआ तो कंट्रोल प्रिसेशन जो टिल्टिंग के चलते लगती थी वो कम लगेगा, आराम से लगेगा. पीसी आराम से जब लगेगा तो जितना वेस्ट में वो भाग रहा था वो कम होगा. जी सर. तरुण, अक्षय, जी सर. तरुण, यस सर. आ रही बात समझ में? जी सर. रिमेंबर कि जो हमने साइकिल देखी थी जिसमें हॉराइजन था, जिसमें मेरिडियन था और इसमें ये एलिप्टिकल साइकिल थी
जब यहाँ पे टिल्टिंग शुरू हुई और टिल्टिंग यहाँ पे है, तो इस टिल्टिंग के चलते कंट्रोल प्रिसेशन लगा था या नहीं? ठीक है सर। Yes, और sir. इतना एजिमुथ एंगल भी क्रिएट हुआ पड़ा था, इसलिए और टिल्टिंग होती जाती है। ज्यादा टिल्टिंग होती है तो कंट्रोल प्रिसेशन बढ़ता जाता है। यस सर। यहाँ पे होराइजन से इतना ऊपर है या नहीं स्पिन एक्सिस? जी सर। उतना अगर टिल्टेड है तो कंट्रोल प्रिसेशन और भी लगेगा, एंड दैट मेक्स इट कम टू द वेस्ट साइड, करेक्ट? यस सर। क्योंकि Yes, sir. टिल्टिंग थी तो ज्यादा कंट्रोल प्रिसेशन लगता है, दैट मेक्स इट ब्रिंग्स इट टू वेस्ट। अगर हमने इसको यहीं पे अपोज किया होता, जो टिल्टिंग हो रही थी उसको रोक देते यहाँ पे, तो कंट्रोल प्रिसेशन इसको यहीं तक लेके आ सकता था। अगर ये यहाँ तक नहीं जाता और इतना ही टिल्टिंग अगर रहती तो कंट्रोल प्रिसेशन कम लगता, तो ये यहाँ यहीं से मुड़ जाता या नहीं? जी सर। So that is what is happening when we are opposing the tilting. PG is there, PD is here. जब हम इसको अपोज करते हैं तो आगे जितना ओवरशूट कर रहा था वो कम हो जाता, और उसी के Okay, sir. चलते एम्पलीट्यूड उसका कम हो जाता है। So the question is, how do we apply this precession? कैसे we want to move the spin axis, oppose the spin axis going up or down so that it remains near the horizon. So knowing the precession, that precession is angular deflection of the spin axis when a torque is applied. हम vertical torque लगाते हैं तो spin axis horizontal जाता है, 90 degree पे deflection. Damping in precession is application of a horizontal torque on the spin axis, which results in a precession of the spin axis in vertical plane opposite to the tilting. That's the definition of damping in tilt. This concept is necessary to understand because the question is asked. Either आप याद करके इसको बताइए या समझ के बताइए. I am trying to explain what it is, how it happens. Damping in tilt is basically application of a torque on the spin axis in vertical plane, which results in precession of the spin axis in vertical plane, which is opposite to tilting. On the very similar lines, what should be damping in azimuth? सो हॉरिजॉन्टल चाहिए तो वर्टिकल वो फोर्स लगाएंगे। तो सर उसमें वो अब जिस डायरेक्शन कर दीजिए और सर आपका इसमें definition. वो जो रोटेशन का भी वो रहेगा ना कि जिस डायरेक्शन में उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग प्रिसिजन का डायरेक्शन आएगा ना सर। तो हमें नीचे चाहिए तो उसके Correct, एकदम correct. Now I have a given type of rotation, given type of compass, either top heavy or bottom heavy. अगर top heavy है तो एक रोटेशन तो फिक्स हो गई, अगर bottom heavy है तो वो रोटेशन फिक्स हो गई। अब हम डैम्पिंग करेंगे। You are right that damping in tilt is used in one kind of compass, top heavy, and damping in azimuth is used in another kind of compass, the bottom heavy. So these two dampings are used in two different type of compasses, bottom heavy, top heavy. And for those things, we already have the clockwise or anti-clockwise rotation fixed. As we know, as discussed, top heavy counterclockwise, bottom heavy clockwise, top heavy damping in tilt, bottom heavy damping in azimuth. So as we have already defined, what is damping in tilt is an application of a torque in horizontal plane
which results in the precession of spin axis in vertical plane which is opposite to tilting. अगर tilting ऊपर जा रही है तो damping precession नीचे लेके आता है. अगर वो नीचे जा रही है, tilting नीचे हो रहा है, तो damping precession उसको oppose करता है और इस चक्कर में वो horizon की तरफ आता है. By the same token, damping in azimuth is application of a vertical torque which results in precession of the spin axis in horizontal plane opposite to control precession. But it is similar to control precession क्योंकि control precession भी उसको azimuth की तरफ लेके जा रहा है, sorry, meridian की तरफ लेके जा रहा है, but वही उसको away भी लेके जाता है. When it was going east, control precession was bringing it towards the meridian, but that itself, because of tilting, it was going further west. So when we have damping in azimuth, जब वो meridian से दूर जाने लगेगा, तो damping oppose करेगा उसको, then नहीं, दूर नहीं जाने का, वापस चलो. जब वो east में जाएगा, तो फिर से oppose करेगा. When it is going towards the meridian, damping in azimuth is helping. Okay, yes, go ahead. जब इससे मेरिडियन से दूर होने लगेगा, then it changes its direction. नहीं, उधर नहीं, stop. So are we clear about the concept of damping? What is damping? In simplified Yes, sir. language, Yes. damping is used to remove the oscillations, elliptical oscillations. How? By reducing the amplitude in successive cycles. Can be done in two ways. Either damping in tilt or damping in azimuth. Already discussed that damping in tilt is used in top heavy compasses. Damping in azimuth is used in bottom heavy compasses. Now the question is how to apply this torque. How to achieve damping in tilt and how to achieve damping in precession. Torque तो लगानी है. Gravity control के लिए weight लगाया था, tilt होता था तो weight लगती थी नीचे की तरफ और control precession हो रहा था. Now how it is done in case of damping. So do we remember the rotor casing, जिसके भीतर में rotor घूम रहा है, spin axis, rotor casing, the rotor is turning inside, and we had a weight placed on top of the rotor for gravity control. But we have removed that weight, haven't we? वो weight हटा दिया हमने. अमितोज सर, सब सोए हुए हैं. अमित, ये कौन बोले? देव साहब बोले. हाँ देव साहब, हमने वो वेट हटा दिया थे टॉप या बॉटम से, वेट हटा दिया या नहीं? हटाया था सर. क्यों हटाया था? क्योंकि सर रोलिंग में वो इनएक्यूरेसीज दे रहा था. वेरी गुड. तो उसकी जगह हमने क्या किया था? सब मरकरी. सर हमने वो बैलिस्टिक बनाया था. लिक्विड बैलिस्टिक. Very good. Now for damping precession, we are again going to place another solid weight. बहुत छोटा सा, about 17 grams. For damping precession, again we are going to put a weight on top of it. This time we are not going to call it control weight. We are going to call it damping weight. कहाँ गया? So if
if this is the rotor, this is the spin axis. If you are looking like this, earlier the weight was put on top of the dead center of the spin axis like this, and in this. Both ways it was dead center. When horizontal, it was not producing any torque. The control weight, when we had placed earlier, top heavy and bottom heavy, it was placed right here in the center so that it was acting directly on the spin axis, producing no torque. Only when it was tilted that it was acting at a distance away and producing a torque. The damping weight, on the other hand, is not placed here directly above the spin axis. No, it is shifted to the side, little to west, as seen from south end. North wo hai. It is shifted to little bit on the west. So if you see like this, it will be here. It will be seen right on top. But if you see from the side, it will be here. So the damping weight is now placed here at this place. What is the result? Let me pick up one of my tools, which I would like to show you with. Sorry. So, as we said, the weight, the control, the casing is here. The weight earlier was dead center of the spin axis. इस spin axis के ठीक ऊपर में लगता था, but now it is shifted to this side. This weight, since it is on the side, ये पूरे चीज को, पूरे कंपास को तो पलट नहीं देगा. 17 ग्राम का weight is acting vertically downwards, but it is producing no effect, क्योंकि ये base जो है वो तो fixed है. Base is fixed here. The weight is placed offset from the center, so it is having a vertical component acting downwards, but that has no effect because it cannot tilt the whole thing or cannot bend the whole thing like this. So there is vertical component. Now we can see this in the same way, that the weight is shifted to this side. The weight is away from the spin axis. This is the spin axis, and it is spin axis is the spin axis is like this. The damping weight is offset on the west. When horizontal, the spin axis, it is having only a vertical component trying to tilt it like this, but नहीं, क्योंकि ये rigid है, अपने base में rigid. But the moment there is tilting happening, what happens to the weight? When there is tilting happening, अगर आपके पास चश्मा या कुछ इस तरीके का है तो यूं रखिए, जब इसमें टिल्टिंग होगी तो इज इट गोइंग लाइक दिस ऑल्सो? अभी ये वर्टिकली डाउन काम कर रहा है लेकिन पूरे सिस्टम को पलट नहीं रहा. बट व्हेन देयर इज टिल्टिंग, नाउ डाउनवर्ड्स टिल्टिंग, so is it going like this? Is it having a Yes, horizontal tipping effect also? Yes, sir. So what was vertical here, when tilting takes place, there is also a horizontal component being created only when there is tilt. Spin axis horizontal, no horizontal torque. But the moment there is tilting like this, upwards tilting, आप देखते हैं कि ये weight जो है इसको यूं घुमाने की कोशिश करता है. That means spin axis is being turned like this
because of this weight. When I tilt it like this, there is horizontal, एक vertical component भी है और एक horizontal component भी है. So this horizontal component, is it trying to turn the spin axis like this? Yes, sir. That means we have applied a horizontal torque on the spin axis because of this weight. Only when tilting is there. जैसे ही tilting होती है तो ये horizontal component काम करता है. जब horizontal component काम करेगा, that means we have applied a torque in horizontal plane. इसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं. What should be the result? Horizontal torque, vertical precession. Which is opposite to the tilting. जब tilting हो रही थी उसके opposite वो torque लगती है और precession होता है. So simply by placing a weight little offset from the center of the spin axis, we are achieving this damping. All right. So this is how the damping is achieved, by placing a weight on top, damping weight on top of the rotor casing, offset little to the west of the spin axis. Spin axis will be like this. ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ उधर. तो वेस्ट में थोड़ा सा एक वेट रखते हैं. जब हॉरिजॉन्टल है, सॉरी, द स्पिन एक्सिस व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल, दिस ओनली हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन पूरे सिस्टम को पलटता नहीं क्योंकि रिजिड बेस पे है. बट जैसे ही टिल्टिंग होती है तो इसको यूं घुमाने की कोशिश करता है, टॉर्क लगती है, व्हिच इज ऑपोजिट टू द, आई मीन द टॉर्क विल क्रिएट, इन टर्न विल क्रिएट प्रिसेशन, which is opposite to tilting. जो tilting हो रही थी उसके opposite उसको it brings it down. सर तो जो वेस्ट में इसलिए ही रख रहे हैं ताकि बार बार वो नॉर्थ को अलाइन करता रहे ना, टिल्ट. Exactly. अभी हमने डैम्पिंग क्या बात किया था. अब जब टिल्टिंग कम होगी उसको अपोज कर दिया हमने, तो कंट्रोल प्रिसेशन भी कम लगेगा. तो वो जितना दूर जाता था वेस्ट में ऑफसेट ओवरशूट करके वो कम जाएगा. जब नीचे आ रही है तो हम उसको ऊपर से, नीचे से रोक रहे हैं, नीचे नहीं जाने देते. तो टिल्टिंग जो है अप एंड डाउन को हमने रोक दिया और उस चक्कर में कंट्रोल प्रिसेशन और ड्रिफ्टिंग दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते. सर यहाँ एक क्वेश्चन है. सर जब ये वेट स्विंग करेगा, अब ये तो टॉप हेवी की बात कर रहे हैं हम लोग. हाँ, साउथ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन हो रहा है रोटर का. तो सर जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये ऊपर की तरफ टिल्ट होगा तो वेट जो है पीछे की तरफ स्विंग करेगा. okay, let us see then. Is this the spin axis? Is this the rotor? कहाँ गया रोटर मेरा? Is this the rotor? Spin axis Yes. and rotor? हाँ. Seen from south end, it is rotating like this counterclockwise. ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे मार्कर है तो पता चलेगा. ठीक है. हाँ सर. Damping weight is placed here somewhere. When the tilting takes place, it is going up in northern hemisphere. हाँ सर. तो सर ये That स्विंग means- करेगा तो That प्रेसिजन. means the spin axis going up. This is going to bring it towards this side. यस सर. That means the torque which is applied is trying to bring the spin axis to this side. Torque is Yes. acting this way. अभी हमने देखा था जैसे ये हुई इधर को घूमता है. So if you think, let us take this particle here. This particle here. It was rotating counterclockwise. And it is also being brought to this side. तो एक वेक्टर इस तरफ को, एक वेक्टर इस तरफ को. ठीक है. यस. Yes, sir. So which side the precession will take place?
सर एक अगर वो इस एंड पे लगेगा तो सर नीचे की तरफ लगेगा. Again, the torque is being applied because of this tilting. The torque is applied in this western direction. हाँ. ठीक है. हाँ. तो टॉर्क यूं लग रहा है, मतलब हम इस डॉट को इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. हाँ. तो डॉट दिस पार्टिकल हियर इज एक्सपीरियंसिंग टू मोशन, एक इस तरफ को, और जब हम यूं कर रहे हैं, यूं इसमें टॉर्क लगा रहे हैं, तो द पार्टिकल इज आल्सो कमिंग हियर. So in turn, this will, if you go through it, this will make the particle move in the direction so that the spin axis will be going down. Tilting was upwards. जो दो फोर्स लगे, डैम्पिंग का वेट लगा, उसके चलते जो ये अपवर्ड्स थी, ये जो टॉर्क लगा उसके चलते ये नीचे जाएगा, opposite to tilting. Tilting upwards, this torque applied here will go down. Okay. If you want to see this, the rotor rotating anti-clockwise, seen from my south hand. Yes, sir. Seen from my south hand, it is rotating anti-clockwise. Yes, sir. When I move it in this direction, किस तरफ को गया ये? When I apply a torque in this direction, किधर को गया? नीचे की तरफ से, साउथ. अब टिल्टिंग अपवर्ड्स हो रही थी, और हमने टॉर्क इधर से लगाया, जो चश्मा दिखाया कि इधर को जा रहा है, मतलब यूं घुमाने की कोशिश कर रहा है. तो टिल्टिंग किधर को हुई और प्रिसेशन किधर को हुआ? साउथ, मतलब सी हॉरिजॉन्टल की तरफ, वर्टिकली डाउन. प्रिसेशन किधर को हुआ? डाउनवर्ड्स हुआ ना? यस सर. ये डाउनवर्ड प्रिसेशन टॉर्क की वजह से हुआ, और टॉर्क लगी किस वजह से? क्योंकि टिल्टिंग हुई थी अपवर्ड्स. तो टिल्टिंग अपवर्ड्स causing a damping precession downwards, damping precession opposite to tilting. Okay. Clear? Yes. So done. That is damping precession. How do we do it? Just by placing a weight offset little to the west of the spin axis. On the other hand, damping in azimuth is something similar to control precession, but जैसे हमने बात किया कि when it is the spin axis is going towards the meridian, the damping precession will help it. जैसे ही मेरिडियन से दूर जाने लगेगा तो उसको अपोज करेगा, फिर से जब वापस आ रहा है तो हेल्प करेगा, मेरिडियन से फिर ईस्ट में जाएगा तो उसको अपोज करेगा. It is exactly the same way the door works. हम एक लिक्विड को अलाउ करते हैं, स्प्रिंग इधर को धकेलता है, लिक्विड को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो लिक्विड हाइड्रोलिक ऑयल इज अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग सो दैट द डोर कम्स क्लोजेस वेरी स्लोली. Damping in azimuth in the very similar fashion is done by controlling the flow of liquid between the two parts. If you close the connection between the two, अगर टाइट कर दें, बंद कर दें, तो टिल्ट होती है, तो कोई वेट शिफ्ट नहीं होगा. उधर के लिक्विड उधर, इधर के लिक्विड दोनों तरफ अपनी तरफ लॉक रहेगा. थोड़ा थोड़ा खोलेंगे तो धीरे धीरे आना शुरू होगा, धीरे धीरे कंट्रोल लगेगा. ज्यादा खोला तो जल्दी से लिक्विड आएगा, ज्यादा वेट शिफ्ट होगा क्विकली. ज्यादा अगर लिक्विड शिफ्ट हो रहा है तो कंट्रोल प्रेसेशन जो लग रहा था वो जल्दी लगेगा. अगर थोड़ा सा हमने टाइट कर दिया तो वो कंट्रोल प्रेसेशन थोड़ा धीरे हो जाएगा या नहीं? तो कंट्रोल प्रेसेशन तो था ही, लेकिन हमने जो थोड़ी स्क्रू टाइट कर दी, बोर ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस्ड, तो जो कंट्रोल प्रेसेशन लगने का जो टाइम था उसको हमने अपोज कर दिया. लिक्विड अब धीरे धीरे जा रही है, तो कंट्रोल प्रेसेशन को अपोज कर दिया हमने.
Same way, when it is going like this, we oppose it. When it goes, the flow is restricted. तो वो धीरे 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 पार होता है. जो कंट्रोल प्रेसेशन लग रहा था बिकॉज ऑफ लिक्विड फ्लो, दैट इज स्लोड डाउन, डैम्प कर देते हैं उसको. जो लिक्विड फ्लो थी झटके से अगर पार होगी तो झटके से टॉर्क लगेगा, स्लो डाउन कर देंगे तो धीरे धीरे आएगा. वही दरवाजे वाला फंडा. So damping in azimuth is achieved just by controlling the core of the connecting tube between two reservoirs. Nothing else. एक स्क्रू थोड़ा सा टाइट किया, डैम्पिंग बढ़ जाएगी. खोल दिया, डैम्पिंग कम हो जाएगी. पूरा खोल दिया, डैम्पिंग खत्म. So now we are going to take a look at this damping process. What is damping? Damping in tilt and damping in azimuth. We are going to read it on the slide. कितना टाइम है? Oh, टाइम तो खत्म हो गया. अभी अगले क्लास में we'll read through this and we'll talk about the settling point of the gyro compass. जब हमने damping कर दिया तो settle होएगा. अभी जो हमने देखा था कि आके रुक जाता है, तो कहां पे रुकता है एक्चुअली? Where is it going to settle? We'll take a look at that in the coming class. Tarun, what happened? सब ऊपर से चला गया. अक्षय जी, जवाब नहीं देते यार, ये मजा नहीं आता. प्रिंस, फ्रेंड्स, मुदस्सिर भाई, हाँ जी सर. पकड़ में आ रहा है कुछ कि नहीं? थोड़ा थोड़ा. चलो, जब हम लोग स्लाइड पे पढ़ेंगे तो इट विल बिकम लिटिल बेटर. वी आर गोइंग टू रिवाइज इट. वी आर गोइंग टू रीड द सेम थिंग ऑन द स्लाइड व्हाट इज हैपनिंग. तो ये सब चीजें एक बार में वैसे भी समझ में नहीं आती बॉस. सो कोई इश्यू नहीं है. एक बार बोल दिया आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता. You will have to do it couple of times. You will have to read it couple of times. तब समझ में आने लगेगा और बढ़िया से आएगा. No issue at all. ठीक है? So we take a break now. Meet after 15 minutes. We have next class also. So now from here it will become more interesting. जो ये थोड़ा सा heavy part था, उससे थोड़ा सा interesting part होएगा अब के बाद. एक बार पढ़ लें इसको, रीडिंग डाल लें, उसके बाद चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद. Keep your questions ready if you want to ask something. अगले क्लास में कुछ क्लैरिफिकेशंस, तो थोड़ा हिम्मत बनाइए और पूछिए क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम. राइट, साइनिंग ऑफ नाउ.